नीरक्षीरविवेकिनः प्रियदर्शकाः सादरम् अभिवादनम्। गवीषद्विवेदिना सह अहमस्मि रेखा। अभिनन्दनं मत्पक्षतोऽपि वार्तावली दर्शकेभ्यः। वार्तावल्याम् अद्य आरम्भे एव मदीया सहयोगिनी उपस्थापयति विवेकविषयम्। आम्, विवेकस्तु परमावश्यकः अस्मदीय जीवनयापनाय। यथा च उच्यते सहसा विदधीत न क्रियाम्। अविवेकः परमापदां पदम् तथा चैव नानृतात् पातकं किञ्चित् न सत्यात् सुकृतं परं विवेकात् न परो बन्धुः इति वेदविदो विदुः। वेदों के जानकार कहते हैं कि असत्य के अतिरिक्त अन्य कोई पाप नहीं, सत्य के अतिरिक्त अन्य कोई सत्कर्म नहीं और विवेक के अतिरिक्त अन्य कोई भाई नहीं, अर्थात विवेक ही एकमात्र बंधु है। Those who know the Vedas declare there is no evil other than falsehood, no good other than truth, and no friend other than wisdom. न सत्यात् सुकृतं परम्। आधुनिके च कलियुगे यत्र असत्यमेव वर्चस्वम् आतनुते सत्य परिज्ञानाय उत्तमोपायः अस्ति वार्ता परिज्ञानम्। नूनं लोकेभ्यः सत्य व्याख्यापनमेव अस्मदीय प्रवाहि वार्तानां मूलहेतुः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातस्य दादरा नगर हवेली इत्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च द्विदिवसीय यात्रायाः अवसरे नैकेषां विकासयोजनानां समारम्भं विहितवान्। मोदिना सूरते कैटलफीड इत्येतेन पशुआहार संयन्त्रेण साकमेव आइस्क्रीम इत्यस्य पयोहिमनिर्मितपरस्य संयन्त्रस्य विशिष्ट सौविध्ययुतस्य च चिकित्सालयस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तत्रैव सौराष्ट्रस्य बटोद मध्ये जलं प्रापयितुं सौनी इति सेचनार्थं सौराष्ट्रे नर्मदावतरणम् इत्याख्या परियोजना चापि तेन समारब्धा। अस्मिन् अवसरे एकां सभां सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् जनेभ्यः अल्पमूल्यात्मिकायाः चिकित्सा सेवायाः उपपादनार्थं नैके पदक्षेपाः समुत्थापिताः सन्ति। ओडिशायाः राजधान्यां भुवनेश्वरे भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य कार्यकारिण्याः द्विदिवसव्यापि समुपवेशनं सम्पन्नम्। अत्र प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं भाजपाध्यक्षम् अमित शाहं च समेत्य नैके वरिष्ठनेतारः सम्मिलिताः अभूवन्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् देशस्य स्वतन्त्रता प्राप्तिप्रसङ्गे जनजातीयैः प्रदत्तं प्रशस्यं योगदानम् आगामि सन्ततिभ्यः प्रत्यायनाय प्रशासनं दृढसङ्कल्पम्। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा तत्रत्यस्य प्रसिद्धलिङ्गराजमन्दिरस्य दर्शनं कृत्वा पूजार्चनापि समनुष्ठिता। राष्ट्रपतिः प्रणब मुखर्जी बिहारे महात्मा गान्धी सम्बद्धस्य चम्पारण सत्याग्रहस्य शताब्दपूर्त्यवसरे आयोजिते कार्यक्रमे भागम् अभजत्। अस्मिन् अवसरे तेन स्वतन्त्रता सेनानिनः सम्मानिताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन EVM इत्यस्य वैद्युत मतदान यन्त्रस्य अन्तर्गतं मतदातृलेखा परीक्षा प्रणाल्याः संयोजन विषयकं निर्वाचनायोगस्य लक्ष्यं प्रपूरयितुम् एको महत्त्वपूर्णः पदक्षेपः उत्थापितः। प्रशासनेन पारे 16 लक्षं VPAT इत्येषां मतदातृनिभालित लेखा परीक्षापराणां यन्त्राणां क्रयणार्थं 300 कोटि रूप्यकाणाम् आवण्टनम् अभिमतम्। शिमलायाः चौपाल मध्ये नरवाक्षेत्रं निगसा दुरापन्न भयंकर बसयान दुर्घटनायां 46 जनाः मृत्युमुपगताः। अस्मिन् बसयाने 50 संख्याकाः यात्रिणः अवर्तन्त। राज्य प्रशासनेन दुर्घटनायाः अन्वीक्षणादेशः प्रदत्तः। वर्षेऽस्मिन् समस्तेऽपि देशे दक्षिण पश्चिम मानसून वायुः सामान्यः सम्भवेत् इति ऋतुविज्ञान विभागेन आशास्यते। ऋतुविज्ञान विभागानुसारेण जून मासात् आरभ्य सेप्टेम्बर मासपर्यन्तं देशे प्रतिशतं 90 मिता वृष्टिरनुमीयते। अत्रान्तरे देशस्य निखिल भूभागेषु जनसामान्यं निदाघलहर्या भृशं प्रपीड्यमानं वर्तते। ब्रिटेन देशे साम्प्रतम् अवधिपूर्वमेव साधारण निर्वाचनं स्यात्। प्रधानमन्त्री पदासीनया थेरेसा मे वर्यया वर्षत्रयपूर्वमेव जून मासस्य 8मो दिवसः निर्वाचनायोजनाय समुपकल्पितः आसीत्। गवीश विविध वार्तावृत्तैः सत्यस्य मुखम् अपिहितं, परं मन्ये अस्माभिः अन्यदपि एकं सत्यतथ्यम् अवधेयम्। किमन्यत्? कश्चित् वाग्विशेषः? न हि कालिदासमेव, परम् अस्ति वाग्विशेषः। उत्कण्ठां मे वारय। अपि जानासि, आधुनिके लोकसंख्या बहुल जगति लोकोपयोगी संसाधनानि शनैः शनैः क्षीणताम् आपद्यन्ते। तेष्वेव च परिसंख्यते ऊर्जस्रोतः। सम्यक्। पारंपरिकोर्जा स्रोतांसि तु आसन्न विनाशानि एव। इदञ्च तथ्यम् अवधेयम् अस्माभिः सर्वैः। अतश्चैव ऊर्जसः नवीकरणीय स्रोतांसि आधिक्येन गवेषणीयानि।
नवीकरणीयानि ऊर्जस्रोतांसि तानि येषां हि भाण्डाराणि प्राकृतिकप्रक्रियाभिः पौनःपुन्येन आपूर्यन्ते। देशे नागरीकरणवृत्तिषु विवर्धमानासु सतीषु ऊर्जसः उपलब्धिसन्दर्भे प्रशासनं महदाह्वानानि सम्मुखीकुरुते। विद्युत्क्षेत्रीयाः समस्याः समाधातुं प्रशासनम् अक्षयोर्जसः पवनोर्जसश्च स्रोतसां दोहनाय कृतश्रमम्। अशेषेऽपि विश्वे कृष्णाङ्गारशिलातैलसम्बन्धिनः पदार्थाः सीमितमात्रिकाः सन्ति। अतश्चैव सौरोर्जा, पवनोर्जा, जलविद्युत् समानाम् ऊर्जसः अभिनवविकल्पानां विषये अवधानम् आवश्यकम्। साम्प्रतिके काले देशे अक्षयोर्जसः उत्पादनं प्रायः 34 गीगावाट् मितं वर्तते। तत्र चापि पवनस्रोतसः 22 गीगावाट् मितं, सौरस्रोतसः 3 गीगावाट् मितं, अवशिष्टमात्रिकं च जैवस्रोतसः उपलभ्यते। भारतप्रशासनेन 22-2000 यावत् नवीकरणीयोर्जस्रोतोभ्यः उत्पादनलक्ष्यं पादोन 200 गीगावाट् मितं निश्चितमस्ति। एतदधीनं च पवनोर्जसः 60 गीगावाट् मितं, सौरोर्जसः 100 गीगावाट् मितं, जैवोर्जसः 10 गीगावाट् मितं, लघुजलविद्युत् स्रोतोभ्यश्च 5 गीगावाट् मितम् उत्पादनम् अधिगमिष्यते। ऊर्जा वो जीवन का अटूट अंग बन गई है। भारत ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का सपना देखा। केंद्र प्रशासनेन देशे ऊर्जक्षेत्रे निर्मलोर्जसः विषयः प्रामुख्येन लक्ष्यीक्रियते। एवं हि राष्ट्रं निर्मलोर्जसम् अवाप्स्यति। वैश्विकोष्मावृद्धिसमस्या च कार्बन् इति दूषितवायोः उत्सर्जनव्यवकलनेन समाधातुं शक्यते। अतश्चैव नवीकरणीयोर्जप्रयोगं प्रोत्साहयितुं प्रशासनेन ऊर्जक्षेत्रं मेक इन इंडिया संकल्पदान्तर्गतं समावेशितम्। वैश्विकस्तरे नवीकरणीयोर्जसः विस्तरार्थं प्रशासनेन जगतः 21 देशैः सह सौरसंयुतिः विहिता अस्ति। अनेन च स्पष्टमिदं यत् भारतप्रशासनेन नवीकरणीयोर्जसक्षेत्रे विहितप्रयासैः अशेष विश्वं सन्दिष्टमस्ति। अस्मदीयानि शिलातैलभाण्डाराणि आगामि कतिपयवर्षेषु प्रायशः ह्रासमेष्यन्ति। कृष्णाङ्गारसञ्चयः अपि वेगातिशयेन ह्रासोन्मुखाः लक्ष्यन्ते। अस्यां च परिस्थितौ मानवजातेः समेध्यमानाः आवश्यकताः पूरयितुं सौरोर्जा पवनोर्जा समानां प्राकृतिकस्रोतसां शरणमेव अन्तिमः प्रकल्पः विद्यते। इमानि एव सर्वथा ऊर्जसः अक्षयस्रोतांसि विद्यन्ते। तस्माच्च एतानि स्रोतांसि अस्मभ्यं कथञ्चिदपि अनुदाराणि न सेत्स्यन्ति। वार्तावल्यै ज्योतिः। गवीश, ऊर्जसः संरक्षणार्थम् अपि वस्तुतः शास्त्राध्ययनम् आवश्यकम्। दर्शकाः, ऊर्जसोऽपि शास्त्रं, यतो हि शासनस्य उपायः शास्त्रम्। गवीश, अद्भुता परिभाषा। मत्कृते तु अश्रुतपूर्वा। अहो, एनामेव संकल्पनामधिकृत्य सविस्तरं व्याख्यापयति अद्य अस्मदीयः विशेषातिथिः डॉक्टर भरतगुप्तः। नमस्काराः महोदय। दूरदर्शनस्य वार्तावल्याः तृतीयप्रभागेऽस्मिन् भवतां भूयो भूयः स्वागतम्। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अद्य भवन्तः साक्षात्कारार्थम् अत्र समुपस्थिताः अस्माकं महत् सौभाग्यात्। मम तावत् प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् भारतीयवाङ्मयस्य अस्माकं जीवने कथम् उपादानं स्यात्। गंभीर प्रश्न है आपका। एक अपार वाङ्मय है जिसके लिए आज हमें दोबारा सजग होकर उसका उपयोग शिक्षा में करना चाहिए। अब ये कैसे होगा? जब प्राथमिक शिक्षा है, जहाँ जब बच्चा स्कूल में आया ही है, छोटा सा है, तब उसको हमें खेल खेल में परिचय देना होगा, कहानी के द्वारा, किस्सों के द्वारा, कि हाँ एक कवि हुए थे, बड़े कवि, महाकवि, उनका नाम इस प्रकार से कालिदास था, या हमारे वैदिक ऋषि हुए थे। तो कथा के द्वारा, कला के द्वारा, संगीत और नृत्य के द्वारा इस सब के
मन में एक सजगता पैदा करनी हो। और फिर जब शिक्षार्थी बड़े हो जाते हैं, लड़के लड़कियां 6ठी 7वीं क्लास में आ जाते हैं, तब हमें कुछ उन ग्रंथों के विशेष अद्भुत कृतियों के नाम बताने होंगे, उनमें क्या है उसका एक सहज परिचय देना होगा। और फिर जब कॉलेज में आते हैं तो उन ग्रंथों को पढ़ाना होगा। संस्कृत में सब नहीं पढ़ाए जा सकते, प्राचीन भाषाओं में नहीं पढ़ाए जा सकते, लेकिन आधुनिक भारतीय भाषाओं में उनका परिचय देना होगा। और जब शोध के स्तर पर विद्यार्थी आएगा तब वो उसको मूल में पढ़ेगा, उस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, रिसर्च करेगा, पीएचडी करेगा। जब इस प्रकार से शिक्षा में हमारा वाङ्मय लाया जाएगा तब वो उपयोगी होगा आज के जीवन के लिए और भारत का एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। भारतस्य समृद्धशास्त्रपरम्परा वर्तते, प्रतिविषयं प्रतिशास्त्रमस्ति। एतस्याः शास्त्रपरम्परायाः आधुनिकशिक्षाप्रणाल्यां कथम् उपयोगः स्यात्, कथं समायोजनं स्यात्? शास्त्र के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, और वो भ्रांति ये है कि शास्त्र प्रायः धर्मशास्त्र ही शास्त्र है। तो ये तो एक सबसे बड़ी भ्रांति है। भारत में देखिए कोयम शास्त्रम, शासन का जो माध्यम है, शासन का मतलब डिसिप्लिन का जो एक तरीका है वो शास्त्र है। शासनोपायम इति शास्त्र। जितनी भी विद्याएं हैं उन सबके शास्त्र हैं। ऐसा नहीं है कि केवल धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित शास्त्र है। तो शास्त्र तो जितनी भी भारतीय विद्याएं हैं, यहाँ तक कि विज्ञान है, ज्योतिष का शास्त्र है, जिसको आप गणित और फलित ज्योतिष जो होती है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, तो उसका भी पूरा शास्त्र है। होरा शास्त्र के समय का, काल का दिग्दर्शन करने वाला शास्त्र। तो जितनी भी विद्याएं हैं उन सब के शास्त्र हैं। अब उनका आज उपयोग कैसे हो, ये एक ज्वलंत प्रश्न है। संस्कृतस्य विकासः कथं स्यात्? संस्कृत के द्वारा, संस्कृत ज्ञान के द्वारा जब धनोपार्जन होगा तब संस्कृत का विकास होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निष्प्रयोजन या अर्थ के बिना किसी विद्या की साधना करेगा। तो अब बहुत सारे तरीके हैं संस्कृत के विकास के लिए। आज देश में लाखों पांडुलिपियां हैं जिनका अध्ययन नहीं हुआ, जिनको व्यवस्थित रूप में रखा नहीं गया, जिनमें ग्रंथ कौन कौन से छुपे हैं उनका प्रकाशन नहीं हुआ। आप हज़ारों विद्वानों को देश के अलग अलग कोनों में लगा सकते हैं, उनको आजीविका दे सकते हैं। फिर जिन ग्रंथों का अध्ययन हो गया है उनका अनुवाद भारतीय भाषाओं में, आधुनिक भाषाओं में होना चाहिए। संस्कृत ग्रंथों का तमिल में और बंगला में और मराठी में अनुवाद होना चाहिए, वो भी संस्कृत विद्वान और संस्कृत के जानकारों के द्वारा होगा। फिर विदेशी भाषाओं में हमारे ग्रंथों का अनुवाद कार्य होना चाहिए, पठन पाठन होना चाहिए। तो ये सब ऐसे साधन हैं जिससे संस्कृत आजीविका देगी, और आजीविका मिलने पर लोग उसकी ओर जाएंगे। धन्यास्मः। वार्तावलीपक्षतः भवत्कृते भूयो भूयः आभारभरः अभ्यर्प्यते। धन्यास्मः। धन्योस्मि। अतिथिवर्यस्य समग्र संवादमाकर्ण्य चकितास्मि। कमपि विषयं साङ्गोपाङ्गम् अध्येतुं नूनं शास्त्रमेव शरणं। तर्हि एहि शिक्षाशास्त्रं प्रति अग्रे सरामः। नमस्कारः। वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतां भवतीनां च अद्य पुनः स्वागतम्। रिक्तः पूर्णः। अधुना रिक्तः पूर्णः इति शब्दयोः अभ्यासं कुर्मः। एषा पुस्तिका, लेखन पुस्तिका। अधुना एषा रिक्ता।
एषः चित्रकोशः, चित्रकोशः रिक्तः, अधुना चित्रकोशः पूर्णः। एषा कूपी, एषा कूपी रिक्ता, अधुना एषा कूपी पूर्णा, एषा कूपी एषः सम्पुटः, सम्पुटः रिक्तः, सम्पुटः सम्पुटः अधुना पूर्णः, सम्पुटः जलेन पूर्णः। एषः स्यूतः, स्यूतः रिक्तः, अधुना स्यूतः चित्रकोशेन पूर्णः। एवमेव अन्तः बहिः, अन्तः वयं सर्वे कक्षस्य अन्तः स्मः, वयं सर्वे कक्षस्य कक्षात् बहिः, कक्षात् कक्षस्य अन्तः। उदरस्य अन्तः भोजनम् अस्ति, उदरस्य अन्तः उदरात् बहिः वस्त्रम् अस्ति, उदरात् बहिः कूप्यः अन्तः जलम् अस्ति, कूप्यः अन्तः सम्पुटस्य अन्तः जलम् अस्ति, स्यूतस्य अन्तः चित्रकोशः, स्यूतात् बहिः, स्यूतात् बहिः चित्रम् अस्ति, स्यूतात् बहिः चित्रकोशस्य अन्तः चित्राणि सन्ति, चित्रकोशस्य अन्तः चित्रकोशात् बहिः, चित्रकोशात् बहिः चित्रम् अस्ति, चित्रकोशात् बहिः बहिः अन्तः, बहिः एवमेव बृहत् लघु, बृहत् एषः सम्पुटः लघु, एषः सम्पुटः एषः स्यूतः बृहत्, बृहत् अस्ति, स्यूतः बृहत् अस्ति। यथा अन्तः बहिः रिक्तः पूर्णः पूर्वं परं, तथैव रिक्ता पूर्णा, रिक्ता बृहती लघ्वी, बृहती। भवान् अत्र आगच्छतु, स्वीकरोतु। एतत् किमस्ति? एतत्तु सम्पुटः अस्ति। सम्पुटः अस्ति, सम्पुटः रिक्तः अस्ति नास्ति, सम्पुटः तु जलेन पूर्णम् अस्ति। जलेन पूर्णः अस्ति, पूर्णः नास्ति, अर्धपूर्णः अस्ति, जलेन अर्धपूर्णः अस्ति। बहु सम्यक्, गच्छतु। भवती अत्र आगच्छतु। एषा किमस्ति? एषा कूपी अस्ति। एषा कूपी अस्ति। कूपी रिक्ता न वा? कूपी अर्धरिक्ता अस्ति। अर्धरिक्ता अस्ति, कूपी अर्धरिक्ता अस्ति। कूपी अर्धपूर्णा अपि अस्ति, कूपी अर्धरिक्ता अस्ति, अर्धपूर्णा अपि अस्ति। बहु शोभनम्। एतत् चित्रम्, एतत् चित्रस्य पूर्वं चित्रं, चित्रस्य पूर्वं चित्रात् पूर्वं चित्रं, चित्रात् पूर्वं चित्रात् परं चित्रं, चित्रात् परं शोभनम्। अधुना श्लोकद्वयम्। एकदा चतुरः काकः भवति हि पिपासितः घटं पश्यति जलं पातुं स्वल्पं तत्र घटे जलं तेन पाषाणखण्डानि प्रक्षिप्तानि घटे शनैः आगच्छति जलं शीर्षे पीत्वा चोड्डयते पुनः। साम्प्रतं सम्पन्ना इयं कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। वार्तावल्याः अन्तः विविधप्रभागाः सन्ति। तत्रापि च नहि त्वं प्रभागं विना अद्यतनी वार्तावली कथं पूर्णा स्यात्? तर्हि इतः परं प्रस्तूयते अयमेव प्रभागः। तेलुगु चलचित्र जगतः मूर्धन्योऽभिनेता येन हि तेलुगु चलचित्र जगत् 80 वर्षाणां प्रदीर्घावधये उत्तमोत्तमचलचित्रैः समृद्धिम् आपादितम् असौ अस्ति दादा साहेब फाल्के पुरस्कारेण गौरवान्वितः अक्किनेनी नागेश्वर रावः। ना पाटनी नोट पलकाल तिलक नी बुग्गलो
సిగ్గుల కాల శిలక నా పాట నీ నోట పలకాల చిలక పలకాల శిలక పలకాల చిలక యహ చీ కదా సి సి శిలక పలకాల చిలక स्वकीयं वैविध्यपूर्णम् अभिनयम् अनुसृत्य दर्शकानां मनः साम्राज्यानि अधिरूढः ANR। निर्धनताकारणात् केवलं पञ्चमकक्षापर्यन्तमेव शिक्षितः ANR इति संक्षिप्तनामा A नागेश्वररावः गतशताब्दीये 24 वत्सरे वयसः 17 एव वर्षे सीतारामजननम् इति चलचित्रे श्रीरामस्य भूमिकाम् अभिनेतुम् अवसरम् अधिगतवान्। ततोऽनन्तरं च यद् घटितं तत्सर्वं स्वर्णिमेतिहासतां गतम्। कुचोनते कुङ्कुमरागशोने पुण्ड्रेक्षुपासां कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः जगदेकमातः। सप्तदशाब्दव्यापिनी स्वीयाभिनय जीवने नागेश्वररावेण सर्वविध भूमिकाः अभिनीताः। ఎంతో గాఢంగా ప్రేమించుకున్నాను, దానివల్ల ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాను. ఇక మళ్ళీ ఆ ఉచ్చులో పడదలుచుకోలేదు. నా ఇష్టంతో పడ్డం ఉంది. నన్ను ఎందుకు ఇలా బంధిస్తున్నావు? शरच्चन्द्रस्य देवदास इति चलचित्रस्य तेलुगु संस्करणे देवदासरूपेण नागेश्वररावेण विहिताभिनयः दिग्गजाभिनेत्रा दिलीपकुमारेण सर्वोत्कृष्टा प्रकीर्तिता। जग में माया ब्रतके माया वेदाలలో తారమింతే నయా ఈ వింతే నయా जग में माया ब्रतके मायालोकम, धर्मदाता, प्रेमनगर, प्रेमाभिषेकम, श्रीरामराज्यम समेषु प्रभावशाली चलचित्रेषु नायकभूमिकाः अभिनीय नागेश्वररावः आजीवनं चलचित्रेषु सक्रियः अवर्तत। स्वीयावगुणान् अपनीय अनारतम् उत्कृष्टकृतये प्रेरणाप्रदायकं तदीयं व्यक्तित्वं चलचित्रानुरागिभ्यः निरन्तरं प्रचोदकं सेत्स्यति। कथ्यते स्म यत् तदानीन्तने काले दाक्षिणात्यः चलचित्रोद्योगः नागेश्वररावं विना रिक्तः इव प्रतिभाति स्म। सम्यक्, परमधुना अस्मदीयदर्शकाः पिपासिताः सन्ति गीतरसपानाय। भो दर्शकाः, अस्मदीयं साम्प्रतिकं स्पर्धागीतं तु स्मर्यते एव भवद्भिः। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। अस्य गीतस्य मौलिकानुवादाः प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः। यथा पूर्वं च अस्मिन्नपि सप्ताहे अस्माभिः भवतां स्नेहभरितपत्राणि सन्देशाश्च अधिगताः। नमो नमः। मम नाम रघुवंशी शेखरः। अहम् उत्तरप्रदेशतः अस्मि। गतसप्ताहे प्रथमवारं वार्तावलीं दृष्टवान्। दृष्ट्वा बहु प्रसन्नां भवाम। बहु शोभनं प्रस्तुति आसीत्। अद्यारभ्य अहं प्रतिसप्ताहे अस्मिन् पत्रिका वार्तावलीं द्रक्ष्यामि। भवताम् उदारा स्नेहरसधारा आयत्यामपि एवमेव वार्तावलीम् अभिषिञ्चतु इति कामयामहे वयम्। इदानीं च अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। आगामि सप्ताहे पुनरागमनाय नमो नमः। इह सखी विहरति ललित विहार, इह सखी विहरति ललित विहार, सुमनो मोहन नंद कुमार, सुमनो मोहन नंद कुमार, इह सखी
विहरति ललित विहार इहाँ सखी विहरति ललित विहार वादयते मधुरं मृदुवेणुं वसनगतमपि न ध्रुवति सरेणुं इहाँ सखी विहरति ललित विहार इहाँ सखी विहरति ललित सा 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 रे रे सा 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 ग ग ग रे रे प प ग ग ध प प ध प सा सा द रे रे सा ध प ग रे ग रे सा रे सा ध प ग प सा रे सा ध प ध प सा रे ग प द ग प द सा 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 ध प ग रे इहाँ सखी विहरति ललित विहार इहाँ सखी विहरति ललित